I am Dr. Manisha Arora. I am available at Matritva Clinic in Sector 49, South City 2. Today we will talk about ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is a condition जिसमें pregnancy is implanted outside the uterus, somewhere outside the uterus. So this can be anywhere like tube or ovary, but the most common type of ectopic pregnancy is a tubal pregnancy. Generally ectopic pregnancy में जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे प्रेगनेंसी में होते हैं. दैट इज़ दे विल हैव अ मिस्ड पीरियड, दे कैन हैव ब्रेस्ट पेन, टेंडरनेस, इंक्रीज डिस्चार्ज, बट दैट it may be followed by bleeding and pain. So generally we give importance to missed period with bleeding and pain. If these three symptoms are present, then we consider this, we have to rule out ectopic pregnancy. So the characteristic, these three symptoms if present, we have to keep in mind that you might have an ectopic pregnancy. अब ectopic pregnancy के अंदर हमारा जो फर्स्ट डायग्नोसिस होता है वो अगर जितना अर्ली हो जाए उतना पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है. बिकॉज इफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डायग्नोज्ड अर्ली इट कैन बी मेडिकली मैनेज्ड. देर इज सर्टन क्राइटेरिया फॉर मेडिकल मैनेजमेंट. अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया में पेशेंट फिट होता है देन वी ट्राई टू सेव द ट्यूब्स एंड वी ट्राई टू मैनेज द प्रेगनेंसी मेडिकली. देर इज़ अ ड्रग जो कि हम देते हैं ऑन एडमिशन. हम प्रेफर ये करते हैं कि पेशेंट एडमिट रहे, 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रहे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी रप्चर हो सकती है. सो हमें हमेशा पेशेंट को एडमिट करके उसको 2 या 3 दिन तक एडमिट करके उसको कुछ इंजेक्शंस लगाने होते हैं. उससे पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं. इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेडिकली मैनेज हो जाती है. पर अगर मेडिकल मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं फिट हो रही है देन the patient has to be surgically treated. There is a very thin line between medical and surgical management. If you are not fitting into the medical criteria, you have to be admitted, you have to be operated, and the tube has to be removed. Generally, the problem that the patient faces is, will she be able to conceive after one tube is removed? The other tube is always usually healthy, and the chances of repeat ectopic pregnancy is just 7%. So most of the patients are able to conceive once they have had one ectopic pregnancy. There are chances of conceiving naturally later on. Surgical management is required because we cannot leave the ectopic pregnancy without treating. It is a life-threatening condition. As soon as you come to know that you have an ectopic pregnancy, or your report or ultrasound shows that you might have an ectopic pregnancy, you should immediately consult your doctor, because that is the time when the treatment has to be done, if it is medical or surgical. Thank you.